Good morning, children. Hope you all are fit and fine at home. Today, I am going to tell you a very nice story. All of you must have done the reading of your chapter 3, that is True Friends. And you all must be knowing what are friends. Yes, and everybody must be having friends. Even I have friend. I know your answer. You are saying yes, ma'am. Some are saying yes, ma'am. Ma'am, I have one friend. Some are saying, ma'am, I have two friends. Some are saying, ma'am, I have many friends. So, children, everybody has friends. What do our friends do with us? We play with them in the park, then we go to school together, then we study together, have fun together. But children, can you imagine what happens when your friend is in trouble? अगर आपके फ्रेंड के ऊपर मुसीबत आ जाए तो उस समय क्या होता है? एंड इफ़ यू आर विथ योर फ्रेंड, अगर आप साथ में हो तो आपको क्या करना चाहिए? So this story, True Friends, explains us or deals with the problem of how to help your friend in trouble. कैसे हमें अपने दोस्त की मदद मुसीबत में करनी चाहिए. अच्छा बच्चों, अब मैंने आई हैव डन द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर येस्टरडे. आपने भी आई होप must have read the chapter. In the story True Friends of your English reader book, there were 4 friends. They were living in the forest together and they were very happy. Who were the 4 friends? Those who have not read the chapter, those who have not seen the video will not understand who were the 4 friends. But now I am going to tell you the 4 friends were, see, can see in the picture very well. The 4 friends were deer, then turtle, sparrow and mouse. These are the 4 friends who were living in the jungle together, and every evening and morning they used to play together, have fun together, run, then hide, and then eat together and jump in the water and play in the nearby tree. Okay, children, like you also do in the park or in the school in the lunch time. Okay, then one day what happened? Imagine, one day while they were playing in the park, they saw one hunter over there. Now you will ask, ma'am, what is hunter? Many of you must be knowing what is hunter. Hunter is a person who goes in the forest to hunt animals. Hunt animals means to find out animals in the jungle and to kill them, and after killing them to eat them or to sell them in the market. या तो उनको खा लेता है और या फिर उनके बॉडी पार्ट्स को बाज़ार में ले जाके बेच देते हैं. So they need animals, so every day they go to the jungle to hunt for them. और अपने संग वो क्या ले जाते हैं? How will they catch the animal? Suppose you want to catch a fish, then how will you catch a fish from the water? For that you need net. Yes, जाल जिसके अंदर animal फंस जाएंगे. In the same way, hunter is a man who, or a person who takes many things with him with the net. अपने संग एक बहुत से सामान ले जाते हैं और उसके साथ वो नेट भी ले जाते हैं और वो जंगल में उस नेट को बिछा देते हैं और एनिमल don't know that the net is there. They come there to eat the food which they have spread. वो कुछ खाने का सामान वहाँ पे बिछा देते हैं, and when the animals come to eat them, they are caught in the net. वो net में फंस जाते हैं. In the same way, they saw hunter coming. जैसे ही उन्होंने देखा कि हंटर आ रहा है, वो लोग डर गए. They were very scared.
है ना, दे स्टार्टेड रनिंग। सो बच्चों ये बताइए कि अगर सब लोग भाग जाएंगे तो उसमें से कौन सा फ्रेंड ऐसा है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, जिसके बारे में सबको मालूम है कि वो तेज नहीं दौड़ सकता, और वो हमारा फ्रेंड है टर्टल। वी ऑल नो दैट द टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली। द बर्ड, द स्पैरो फ्लू, वो उड़ गई। माउस, चूहा, एज यू ऑल नो, हिड्स इनसाइड द होल, वो अपने बिल में घुस गया। देन डियर, डियर रन्स वेरी फास्ट, डियर रैन एंड फ्लू अवे, एंड बट द हंटर saw the turtle who was trying to go slowly and was caught. वो पकड़ में आ गया और हंटर ने अपने जाल में टर्टल को बंद कर दिया। ठीक है, तभी आपको पता है उस समय, जिस समय हमें प्रॉब्लम होती है उस समय वी शुड नॉट पैनिक, हमें डरना नहीं चाहिए, बट वी शुड यूज़ आवर ब्रेन। And in this story, the friends have used their brain. What have they planned? They have planned that deer will run very fast and go, and the hunter, on seeing the deer, will run before him. वो डियर को देख के सोचेगा कि चलो डियर को भी पकड़ लेते हैं और डियर को भी ले जाएंगे। और when he went there, he saw that deer is dead. उसने देखा कि डियर तो मरा हुआ है और वो बहुत खुश हो गया। वाओ, वो मुझे तो एक छोटा सा टर्टल मिला था नेट में कॉट करने के लिए, बट यहाँ तो बहुत बड़ा सा डियर है, तो वाई शुड आई गो फॉर द टर्टल? आई शुड take this deer home and it will be sold in the market. I will get enough money, and that turtle is very small. वो तो बहुत छोटा है, उससे कुछ नहीं होगा, ये डियर बहुत बड़ा है, इससे तो बहुत फ़ायदा होगा। सो वो भूल गया टर्टल को और स्टार्टेड चेजिंग द डियर। उसने डियर को पकड़ना चाहा, उसके पीछे आया, और जैसे ही उसने डियर को देखा, डियर भाग गया, because deer was not dead. You all know very well, na, deer was acting as a dead person, dead animal, but the deer was not dead. He was trying to fool the hunter. He wanted to save his friend, so he was giving time for the mouse to cut the net with his sharp teeth. So in this chapter, children, there are many things which you should learn. Every chapter of your syllabus, whether it is Hindi or English or EVS or maths, teaches you something or the other. हर chapter आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं. In the same way, this chapter is telling you, teaching you about animals living in the forest and what are their speciality. Like the special feature of a mouse is that they have very sharp teeth. They can cut almost anything. So they have decided that while hunter will go, जब hunter चला जाएगा डियर के पीछे, तो mouse will come out of the hole. वो अपने बिल से निकल के आएगा और टर्टल के नेट को अपने दांतों से काट देगा. टर्टल विल बी फ्री एंड दे विल गो एंड they will run away and go from there, and when the hunter will come back, he will not get the turtle over there. So children, while the hunter was chasing the deer, the mouse and the sparrow both together cut the sparrow, and sparrow was helping the mouse in cutting the net, and the whole net was cut with the sharp teeth of the mouse, and the turtle came out of the net. वो नेट से बाहर आ गया because चूहे ने अपने sharp teeth से नेट को कट कर दिया था, और वो सब बाहर आ गए और वो जाके कहीं दूर छुप गए जहाँ हंटर उनको नहीं देख सकता था.
उसके बाद हंटर को क्या मिला? हंटर को कुछ नहीं मिला और वो उल्लू बन गया। और उन 4 फ्रेंड्स ने मिलकर हंटर को बहुत अच्छे से उल्लू बनाया था। डियर भी सेफ हो गया, स्पैरो वॉज ऑल्सो सेफ, देन रैबिट, sorry, turtle, and one more friend, yes, mouse was also safe. They all ran away from there and hide himself. Some hid himself in the mouse went inside the hole. Turtle hid himself behind the tree. Then deer ran away very far and the bird flew in the sky. उसको तो पकड़ भी नहीं सकता था. So children, and when the hunter came back, what did he saw? उसको लगा चलो डियर नहीं मिला, टर्टल ही ले लेते हैं. टर्टल तो आई हैव कॉट एंड इट इज़ इन द नेट. जब वो टर्टल को लेने आया तो उसने देखा अरे टर्टल इज ऑल्सो नॉट देयर. वहाँ पे डियर भी नहीं मिला और यहाँ टर्टल भी नहीं मिला. एंड हंटर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. बहुत दुखी हो के वो वापस चला गया. आज तो मुझे कोई भी एनिमल नहीं मिला. सो चिल्ड्रन, what have you learnt in the story is that we should always help our friends whenever they are in our trouble. मुश्किल